Good morning, student. I am Ashish Kumar, and now in the series of the Indian hidden history, everyone should know. Just I am going to discuss what was the basic reason to the establishment of the uh, Muslim League, All India Muslim League. मैं इस क्लास में इस चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था। हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एवरीवन शुड नो कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ। बट हमें ये बात समझना जरूरी है कि इन द इस्टेब्लिशमेंट of the All India Muslim League, Muhammad Ali Jinnah was not a founder member of the Muslim League. In 1906, Muslim League came in existence, and then Muhammad Ali Jinnah, he was the member of the Indian National Congress. He was the private secretary of the Firoz Shah Mehta. He was not a founder member of the Muslim League. In 1913, Muhammad Ali Jinnah, he joined the Muslim League, and after 1937, he take the assistance of the Islam just to mobilize the Muslim population in the favor of the Muslim League. Means before 1937, Muhammad Ali Jinnah was considered as the secular leader. He was a great personality. So now, in the series of the Indian hidden history, everyone should know, I am going to discuss what was the basic reason why the All India Muslim League came in existence. Actually, after 1905, in 1905, this was the year of the partition of the Bengal. The partition of Bengal. In the partition of the Bengal was divided into the Eastern Bengal and the Western Bengal. In the Western Bengal, the Swadeshi and the boycott movement were started. Because in the Western Bengal, a Hindu population was in the majority. Hindu Bengali population was in majority. यहां पर मूवमेंट बहुत ही इंटेंस है। यहां के लोगों ने स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को शुरू किया अगेंस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वेयर एज इन द ईस्टर्न बंगाल, एज यू नो, द ईस्टर्न बंगाल का रीजन आसाम के साथ एसोसिएट करके एक नए प्रोविंस को बनाया गया। तब मुस्लिम पॉपुलेशन in the eastern Bengal region, they were too much happy with the separation of the Bengal. उनको ये लगा कि ये एक नया प्रोविंस बना जिससे जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी, एक नए लेजिस्लेशन का इस्टेब्लिशमेंट होगा, लोगों को एक नई एनर्जी महसूस हुई कि यहां पर हम एक नए तरीके से अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस वजह से ईस्टर्न बंगाल रीजन में उस तरीके का मूवमेंट नहीं था जैसा मूवमेंट आपका वेस्टर्न बंगाल रीजन में। और एक्चुअली द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न बंगाल वाज इन ढाका, एंड एज यू नो, on the 30th of the December 1906 in Dhaka, the All India Muslim League came in existence. तो आज के इस सीरीज में मैं इस बात को डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यू कैन से जस्ट टू मोबिलाइज द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स,
the All India Muslim League came in existence. Just to divide the Hindu and then the Muslims, and to give the special privilege to the Muslims, the British government established the All India Muslim League. Actually, हुआ क्या कि in February 1903, the Secretary of the State, he was Morley. He given a speech in the British Parliament, London, where he said, "We will soon bring the representative government." तो जल्दी से जल्दी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट करने की बात शुरू हो रही थी, यानी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी. सो इट वाज ग्रेटली अलार्म टू द मुस्लिम्स इन इंडिया, बिकॉज मुस्लिम्स का पॉपुलेशन कम है, मुस्लिम वेर इज इन मेजर माइनॉरिटी. तो 37 डेलीगेट्स ऑफ द मुस्लिम लीग्स, in which the prominent leader was the Aga Khan, Muhsin ul Mulk, and the third important, the Salimullah, Nawab Salimullah. ये तीन बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे. इनके साथ 37 मुस्लिम डेलीगेट्स. यहां के वायसराय से मिलता है. वायसराय वाज मिंटो, और मॉर्ले और मिंटो के बीच में बातचीत होती है. और फिर द 1 अक्टूबर 1906 में शिमला में इनके साथ इन लोगों की मुलाकात होती है. वायसराय के साथ इन 37 मुस्लिम डेलीगेट्स की मुलाकात होती है. एंड दे सेड, इफ इलेक्शन आर टू बी देयर, हाउ विल बी इलेक्टेड. तो ऐसे सिचुएशन में वायसराय और मिंटो के साथ डिस्कशन होता है. एंड देन फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हम मुस्लिम्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करेंगे. एंड दिस वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 30th of December 1906. बट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, Muhammad Ali Jinnah, he was the private secretary of the Dada Bhai Nehruji. And after the death of Dada Bhai Nehruji, he became the private secretary of Firoz Shah Mehta. Means the Muhammad Ali Jinnah, he was the member of the Indian National Congress. He followed the constitutional gradualism policies. He were the moderate leaders. He was not a founder member of the Muslim League. तो इस वजह से मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. एंड देन in 1906, the Morley-Minto reform introduced, and in 1909, the Morley-Minto reform enacted, and through this, the separate electorate system were introduced. So in 1909, through the Morley-Minto reform, introduced the separate electorate system. In this separate electorate system, the constituencies, now it became reserved for the Muslims, where only the Muslims, he contested the election, and were voted by the Muslims candidate. So All India Muslim League, just to show the loyalty of the Muslims in favor of the British, came in existence. And you can say, just to mobilize the Muslim vote, or just to mobilize the separate electorate system,
For the Muslims who were the loyal to the British government, that was the prime objective ki why All India Muslim League came in existence. So the Muslim League came in existence on 30th of the December 1906 in Dhaka, in the Eastern Bengal region. So that was the reason I was stating. In the Dhaka, the Muslims were in the favor of the British government. They supported the separation of the Bengal. So that is the reason why the All India Muslim League came in existence. Okay, thank you.